Hello friends, today is 17th of December 2023. This video I'm going to analyze the Forex and the precious metal markets. This video will be in English, thoda Hindi, thoda English. So we'll start off with the economic data जो आने वाला है foreign exchange के लिए बहुत important होता है आने वाले incoming data, economic data. लास्ट वीक 3 मेजर सेंट्रल बैंक्स का मीटिंग था, मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग. उसमें फेडरल रिजर्व ने सरप्राइजली थोड़ा डोविश था. इट प्रोजेक्टेड 2 rate cuts फॉर 2024. I was saying that rate cut is coming, and I think the rate cut is coming in March. The first rate cut we are likely to see in March. So this goes with the narrative, but honestly, I was expecting Fed to be little more hawkish in the message rather than I knew that they are going to cut rates, but I was expecting a little more hawkish message as the core inflation was still at 4%. But as the Federal Reserve jaisa dovish dikha, very likely the core inflation and the other inflation measures are likely to be falling. तो अभी मेजर जो इवेंट्स था वो हो चुका है. वी डोंट हैव एनी मेजर इम्पैक्ट. ग्लोबल हॉलीडे है जो कमिंग अप about from 22nd of December. So market is going to die down in its volume, volatility. I'm expecting more range bound movement. But one particular event is there which will lead to which will set the mood for Japanese yen for the holidays time till the January market opens up. This is the Bank of Japan interest rates, which is coming on Tuesday. This will be a major yen mover. Yen के लिए बहुत बड़ा movement क्रिएट करेगा. अगर बैंक ऑफ जापान हॉकिश निकला तो येन को यूएसडी जेपीवाई वी कैन सी अ ड्रॉप टुवर्ड्स 139.8 even, whereas relatively more dovish Bank of Japan will lead to further decline in Japanese yen. Those who are trading Canadian dollar, उनके लिए important data आ रहा है inflation rate. This is the UK inflation rate. I don't think it will matter much, but a drop will lead to softening in the GBP, but a strong high rate of inflation will keep GBP upfloated. As central bank will be expected to keep rate at higher level. तो ये रहा क्रूड ऑयल का इन्वेंटरी भी है. ये तो रेगुलर वेडनेसडे का इन्वेंटरी है. यूएस का जीडीपी आ रहा है ऑन थर्सडे 21st December. This will give some increase in volatility and volume. Other than that, GDP data is coming on Friday, which is for the United Kingdom. But I don't think it will be major mover. Last major mover of the week is this data, which is core PCE price index. This is the last on Friday, which can give some volatility on the dollar. Dollar को volume volatility दोनों add कर सकता है. But after that, we are moving to the Christmas week. I don't think a major movement is coming up during this time. तो और एक बार देख लेते हैं. This last Friday data is likely to add some volatility. GDP data likely mute रहेगा, ज्यादा वॉल्यूम चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं. क्रूड ऑयल रेगुलर इन्वेंटरी आता है. यूके के इन्फ्लेशन रेट उससे जीडीपी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. अगर यूके का इन्फ्लेशन में ड्रॉप आ रहा है सिग्निफिकेंट, पाउंड थोड़ा सॉफ्टन हो सकता है क्योंकि रेट हाइक एक्सपेक्टेशंस गिर जाएगा. तो ओवरऑल ये रहा इकोनॉमिक पिक्चर. अब चलिए टेक्निकल साइड में चलते हैं और मेरा जो आउटलुक है वो थोड़ा डिस्कस करता हूं. This video is largely for rainbow setup users and also for me to look back. एक बात ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग इज एक्सट्रीमली रिस्की बिजनेस. हर कोई को सूट नहीं करता. बिना जान के जंप करना या किसी के भी कॉल पे एक्ट करना बहुत ही रिस्की हो सकता है, इंक्लूडिंग मेरा. तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप किसी का कॉल सुने, मेरा भी. आप खुद देखिए मार्केट को, चार्ट को, जो भी आपका सेटअप है, या आप रेनबो यूजर तो इसके जरिए, और बेस्ड ऑन आवर योर रीडिंग यू मेक द डिसीजंस. तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे डॉलर इंडेक्स में और इसको एनालाइज करने के लिए विल ब्रिंग आवर फेवरेट इंडिकेटर जो है एसडी रेनबो वेव वर्जन 1.
और इसमें हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे फोरेक्स सेटअप। फोरेक्स सेटअप वी आर गोइंग टू सिलेक्ट एंड अप्लाई। तो लेट्स मेक इट बिगर अ बिट सो दैट आप सब लोग देख पाए। तो चलिए अब सब लोग देख पाएंगे डॉलर इंडेक्स। लेट्स कम डाउन टू द डेली चार्ट। डेली चार्ट में हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। डेली चार्ट में डॉलर वाज सिग्निफिकेंटली बियरिश। हम लोग बियरिश का बात कर चुके हैं इस लेवल से, और धीरे धीरे जैसे एक्सपेक्टेशन था कि डॉलर सारा लेवल रीच कर चुका है। मेरा पहला वीडियो में कोई भी देख सकता है, मैं भी देख सकता हूँ। इट वाज एक्सपेक्टेड कि 102.8 एरिया, वहीं एरिया पे डॉलर रुका। इट वेंट इनटू कंसोलिडेशन। once again it reached the trench bottom 101.6 area, which if I bring the real candle, you'll be able to see this area 101.6 and this strong support 102.17. So between इन दोनों के बीच में डॉलर पहुंच के डॉलर इज हैविंग अ करेक्शन। यहाँ पे अगर RSI X को देखेंगे वी कैन सी अ कम बैक, बट अभी ये बोल नहीं पाएंगे हम लोग कि ये नो दिस इज रिवर्सल एंड डॉलर सेल ऑफ इज डन विद। ये इसलिए नहीं बोल सकते बिकॉज ऑफ द थीम। फेडरल रिजर्व हैज रियली गिवन अ रेट कट सॉर्ट ऑफ। अगर मार्केट को देखेंगे, बॉन्ड मार्केट को, जस्ट लेट मी चेंज इट टू बॉन्ड। बॉन्ड मार्केट को देखेंगे, US 10-year rate, and since this time it has almost, the market has given a 40 basis points rate cut as per US 10-year। मतलब फेड प्रोजेक्ट कर रहा था, फिर कर रहा है 50 basis points, एंड मार्केट सुन के फेड का कमेंटरी हैज ऑलरेडी गिवन 40 basis points मूव। और उसके बाद वी सॉ अ लिटिल कम बैक ऑन द इंटरेस्ट रेट फ्रंट, और उसने डॉलर को भी सपोर्ट किया। सो डॉलर केम बैक also as the interest rate a bit bounce back. So it was a very strong move on the dollar sell off and based on data। and obviously जो बिग प्लेयर्स है वो अपना शॉर्ट पोजीशन, इतना स्ट्रांग मूव हुआ है उस पे थोड़ा प्रॉफिट तो डेफिनेटली बुक करना पसंद करेंगे। सो आई थिंक द डॉलर का जो ये मूव हुआ है इट्स मोर ऑफ अ प्रॉफिट बुकिंग मूव rather than a theme change move। थीम ये डॉलर इंडेक्स का थीम चेंज हो सकता है अगर यूरो सिग्निफिकेंटली वीक होने लगे, बिकॉज डॉलर इंडेक्स का मेजर पार्ट है यूरो। सो नाउ यूरो का बात करते हुए लेट्स कम डाउन टू यूरो यूएसडी। डॉलर इंडेक्स तो डायरेक्टली ट्रेड नहीं किया जा सकता इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, बट यूरो के यूएसडी कैन बी ट्रेडेड इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ा लिक्विडिटी का इशू रहता है, बट यस ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है यूरो यूएसडी का कि क्यों एंड तक वेट करना या कैंडल का क्लोजिंग तक वेट करना बेहतर होता है। इन इंडिया वी कैन नॉट ऑलवेज वेट फॉर द कैंडल क्लोज, क्योंकि हम लोग एक ब्रोकन टाइम फ्रेम पे जी रहे हैं। सो ओवरऑल यहाँ पे जो एंट्री किया गया यूरो यूएसडी, मेरा जो एंट्री है दैट इज इन अ पार्शियल लॉस। सो क्यों लॉस हुआ? क्योंकि वी आवर एंट्री वाज नॉट परफेक्ट, एज आवर टाइमिंग रिमेन्स ब्रोकन। वी गॉट द यूरो यूएसडी आफ्टर ऑल द मेजर इवेंट्स, नॉट व्हेन इट वाज गोइंग अप। बट यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि ट्रेंड हैज चेंज, बट डेफिनेटली ये जो सेल ऑफ हुआ है दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल 1.10। सो ये भी लेवल था, सो इट इज नॉट एबल टू ब्रेक, नहीं कर पाया, एंड दैट इज बिफोर द हॉलीडे सीजन। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है, बट अभी भी बाई ट्रेड का विन प्रोबेबिलिटी देखिए 82% विन प्रोबेबिलिटी है। तो ओवरऑल मेरा ये थीम को जो मैं प्ले कर रहा हूँ, सॉरी, इस थीम को जो मैं प्ले कर रहा हूँ, तो इसमें मैं खुश हूँ इस करेक्शन से। इफ आई लुक एट 125 मिनट्स, करेक्शन वाज विजिबल। ये रहा, दिस इज 125 मिनट में सेल कॉल आ गया था, एंड इट हैज रीच्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ये आप लोग जानते हैं रेनबो में ये बनता है पहला टारगेट। सो 0.873 इट रीच द लेवल। सो इट रिमेन्स
sort of downward pressure short term में, but I think it will more go into consolidation rather than outright sell off. और ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है, जो ये थीम प्ले करना मैं चाहता हूं कि डॉलर रिमेन्स वीक। तो ये थीम, प्रॉब्लम विद दिस थीम इज कि यूरो इटसेल्फ कैन बिकम वीक। अगर ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी फ्यूचर रेट कट सिग्नल देना चालू कर दिया, देन इट विल बी ए प्रॉब्लम कि यूरो भी वीक, डॉलर भी वीक, देन यूरो यूएसडी जो है वो कहीं पे मूव नहीं करेगा। So that's an issue. Other than this, theme wise, the Euro USD buy trend remains intact. The bigger players are still on the buy side. So very likely further rise on the Euro USD. But एक प्रॉब्लम जो यहाँ पे हुआ, यूएसडी आईएनआर को देखते हैं। यूएसडी आईएनआर वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास कि एक सेल सिग्नल आया था यूएसडी आईएनआर में। वी सॉ इट इन मॉर्निंग, बट इट वेंट एज एक्सपेक्टेड कि ये जो लेवल था, इस लेवल पे रीच करके इट वेंट बियॉन्ड। सो इट डेफिनेटली मूव्ड अ लॉट। You can see the massive move in the USD INR. RBI usually doesn't like USD INR ऊपर जाते हुए। USD INR drop means INR becoming stronger. This is RBI will not mind that much. So this RBI had no intention to stop this volatility. So further a quite a big drop in USD INR. मतलब INR काफी strong हो गया। ये देखिए, अगर INR का relative strength देखेंगे, it rose the most. It is the one of the top performer compared to last. तो यहाँ पे आरएस मीटर में इसको 5 कर रहे हैं, ताकि कंपेयर टू 5 ट्रेडिंग डेज विच इज लास्ट टू लास्ट फ्राइडे। सो लास्ट टू लास्ट फ्राइडे में देखेंगे तो ओवरऑल dollar has lost significant strength, loss. Euro has gained in strength. Yen remains rising but a decline in strength, whereas INR remains flat. But ये अगर हम लोग फ्राइडे से कंपेयर करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि INR was the best performer in Friday. INR outperformed everyone. So it's with a 13.3 points gain. So INR came back pretty good, and with Euro USD weakening, that created a problem for the Euro INR long position. Euro INR long position में clear है कि the भले ही रेड कैप नहीं आया, आप लोगों को दिख सकता है रेड कैप इज नॉट शोइंग, बट the candle size is closing below, and also the background has turned yellow. That means the bull का जो power था वो significantly reduction हो गया। Currently हम लोग देखेंगे तो 12 factors में 5 are with the bulls, 6 are with the bears and 1 neutral। तो ये सब situation में थोड़ा square off करके even ये outlook intact रहता है कि euro can still go up। With this outlook, we can remain long, but not beyond the maximum stop loss, which very likely if market opens up beyond below this point, Monday, this we should look for squaring of the position, moving to the sideline and wait it out for clarity. ये जो अगर even if euro has to break 1.10, very unlikely कि ये holiday season में ये होने वाला है। Let's come to GBP USD. GBP USD is similar. ये after the breakout attempt, strong comeback due to the dollar. But हम लोग देखेंगे तो GBP lost less strength compared to euro. Or dollar rose 3.4 points in strength. So euro significantly downperformed. It down more than 7 points in strength, whereas Japanese yen was stronger. So after GBP, but since INR was a top performer, GBP INR, the GBP USD trade is still looks good on the long side, but here the background has turned yellow. We don't know how INR this strength is going to play out. यहाँ पे दो थीम चल रहा है, एक अपना ट्रेड बैलेंस जो है वो दैट इज ऑलवेज पुश INR हायर मींस वीकर, USD INR हायर। और ये जो इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हुआ है, this reduces the cost of financing for Indian companies, as well as हम लोग का जो deficit हो रहा है trade में, we can finance this at lower cost. So this is definitely positive for INR. So
next week या फिर Monday next year, the focus would be, can INR capitalize on its strength, this strength that it has shown, ki further weakness, then I'll be back trading in USD INR again, because then RBI presence is really on the upside. So if it starts moving once again, it reaches lower RBI comfort zone, then it will start fluctuating again. So INR can become an interesting pair. बट अभी के लिए जो अपना पोजीशन है फॉर द जीबीपी एंड द यूरो, while euro USD, GBP USD still looks good, but due to strength of INR, these two are really has come back. If we look at the uh, candlestick, you'll see a strong down move, but it has not broken the complete down move. Given the two major event and the Friday coming up, this can be considered more of a profit booking. But saying that, this INR strength is very notable. So INR strength can still keep the GBP Euro I pairs under pressure. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूएसडी जेपीवाई. यूएसडी जेपीवाई इज नाउ बेसिकली विल वेट फॉर बैंक ऑफ जापान. What hint is coming from Bank of Japan? Overall market remains in the bearish hand, but if you look at consolidation probability is also very high. Let's look at JPY INR. JPY INR, our bull trade is continuing, as you can see JPY, but overall this INR strength is something we need to counter in all the INR pairs. कि कैसा फिर इसके बाद ये जो drop हुआ, is this a one time? Many a time we see such egg time drop, or is this a significant change in the trend in INR? But overall JPY INR remains bullish, but looks like it is going to be more of a bumpy ride. नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं गोल्ड में. एमसीएक्स इंडिया गोल्ड, ये मिक्स मार्केट सिचुएशन में है. इट वेंट डाउन, सो इट मेड सेंस दैट वी डिड नॉट जंप इनटू बाय. कैंडल अभी भी नहीं रेडी नहीं है एज पर माय सेटअप, so I'll prefer to avoid gold unless further clarity comes up on the gold. It remains in a, as you can see, in a mixed market situation. 3 and 4 factors are with the bull, 5 factors with the bears, and 3 factors are neutral in XAU USD or international gold. Next, we have XAG USD or the international silver, spot silver or CFD contracts. यहाँ पे भी एक mixed market situation. 6 factors among 12 are with the bulls. 3 factors are with the bears and 3 factors are neutral. So staying out is currently my preference. Or those who want to trade, you have to come down to lower time frame and look for opportunity. Like यहाँ पे जो 22 का opportunity आया, then there is a square of opportunity as well. So that's all from my side. Rather than I will jumping to do any kind of trade on Monday, even if अगर आप loss में हो या जो, I think that will be a better strategy to wait out the Monday at least till European market opens up and see for yourself what's happening. So अगर जब market open up करता है Monday, there's a strong sell off. Euro can go down further, but main a lookout will be, can it break sustainably below 1.088? इसके नीचे क्या वो sustainably रह रहा है? Then it's a issue. आई होप ये वीडियो जो है ये आपको हेल्प करेगा. मुझे मालूम है कि सम ऑफ यू आर वरीड अबाउट दिस. लास्ट फ्राइडे करेंसी मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव हुआ, तो हम लोग आईएनआर में मींस यूरो इसमें लेट हो गए because of this big move. Now it has come down sharply and many of the trades could be in loss. But I don't think there is significantly theme in change. Foreign exchange में थोड़ा थीम पे भी ध्यान रखना जरूरी है. बट दिस इज अ सिग्निफिकेंट सेल ऑफ जो एक इम्पोर्टेंट लेवल से हुआ है. बोथ डॉलर इंडेक्स, यूरो हर जगह हम लोग देखिए एक इम्पोर्टेंस लेवल के साथ हुआ है. बट मेन जो नेक्स्ट मूवमेंट होगा इंक्लूडिंग यूरो सब में, कि आफ्टर बैंक ऑफ जापान, की बैंक ऑफ जापान व्हाट इट हैज टू से
regarding Japanese yen. So Japanese yen में थोड़ा position अभी भी मैं buy के side रखूंगा, as it is quite clear from JPY INR that this is fading. So, but in daily chart, it remains bullish with Bank of Japan coming. So rather I will, if yen comes down further, very likely towards 5.8, I might be looking for buy opportunity. But that minding the risk, अगर आप मेरे बात सुन के मत कीजिएगा, minding the risk, Bank of Japan is coming up and it can significantly change the direction. It might go up or it can significantly fall JPY INR. So that's all from my side. I hope this video helps you. अगर ये video आपको help कर रहा है, if you're liking this, don't forget to subscribe for regular updates. All the best from my side and happy trading.